So hi guys, a very good morning to all of you. This is Rahul Prajapati and welcome to Morning Market Brief. So expiry day, 2nd June. So let's start the analysis with SGX and we'll see how we can trade Nifty today. Okay, what are the key points that we need to look for trading the Nifty today? Okay. So let's start with the SGX first. So SGX says that a gap down opening, right, of 83 points as of now. Market is trading near 16,425. Okay. Right. And now let's come to the Nifty chart. So simply if we see this hourly chart of Nifty, right? Okay. So this was the level that we look for, right? Okay. So that was, we have already discussed this 16,400 जो 16,400 का लेवल था मार्केट में, that was a resistance and market broke it up. So market यहाँ से ऊपर ब्रेकअप करके गया है और यहाँ पर वापस उसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया, राइट? यू कैन सिंपली सी दैट. सो ये गैप भी फिल हो चुका है ऑलमोस्ट एंड मार्केट वेंट अप फ्रॉम इन द लास्ट आवर, राइट? ओके, नाउ अ गैप डाउन ओपनिंग अगेन कुड बी लाइक समवेयर अराउंड दिस लेवल ओनली. सो यहाँ से एक सपोर्ट वापस आ सकता है. तो probably if we see this could be the range that we can look for today. So 16,700 on the higher side and 16,400 on the lower side. So ये 300 points का range anticipated रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में, राइट? ओके, मोस्टली वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग एनी मेजर मूवमेंट. इवन इफ दैट कम्स वी नीड टू हैव द ब्रेकआउट अबव दीज लेवल्स, राइट? ओपन इंटरेस्ट में अगर स्पेसिफिकली देखिए तो 2 दिन का लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, 2 दिन लॉन्ग बिल्टअप हुआ था, फिर अनवाइंडिंग भी हुआ है. सो दैट्स जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग दैट वी हैव. अगर मार्केट में यहाँ से अपमूव आना शुरू होता है तो मार्केट फिर यहीं से ऊपर जाना शुरू करेगा. तो 16,400 का होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. नाउ फॉर दिस एक्सपायरी you can see that as we have seen 17,000 पे सबसे ज्यादा कॉल बिल्टअप हो रखा है. so that is a major resistance. probably market आज वहां तक नहीं जाएगा, तो anyhow that has to be become zero, right? okay, 16,000 अगर हम 600 700 और 800 अक्रॉस सारी एक्सपायरी स्ट्राइक्स पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रखा है, राइट? सिंपल अगर हम इतना देखें. और इफ यू गो ऑन डाउन साइड ऑल्सो इट्स सेम, राइट? सो प्रोबेबली कुछ ज्यादा मूवमेंट एंटिसिपेटेड नहीं रहेगा. इवन इफ दैट वी हैव कि अगर 16,600 पे ही सबसे ज्यादा बिल्टअप होता तो उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट शायद मूवमेंट दिखा सकता है, बट नो मूवमेंट एंटिसिपेटेड. सो एनी हाउ 16,700 एंड 16,400 वी कैन जस्ट सी दैट लेवल. ओके, पुट में ज्यादा एडिशन नहीं हो रहा है, कॉल्स में ज्यादा एडिशन हुआ है, तो प्रोबेबली एनी हाउ मार्केट नीड टू होल्ड दिस 16,400, राइट? बिफोर दैट इफ मार्केट ब्रेक्स दैट लेवल देन वी कैन हैव अ probably downtrend in the market, right? Okay, so that is the analysis. Now what else we can see for Nifty? We can simply go and check volume analysis also if we want to do further analysis, if there is a something in this chart. So वैसे अगर हम देखें थोड़ा सा और पीछे चल सकते हैं. let's go like starting of this year. okay, so मेजर रेजिस्टेंस जो था पहले अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 17,200 पर था. एज ऑफ नाउ यहाँ पर कुछ इस लेवल पे दिख नहीं रहा है, इवन नॉट एट 16,400, राइट? ओके, सो ऐसा कुछ साइन नहीं है यहाँ पर, कोई मेजर वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन नहीं है इस तरफ. ओके, सो नो यूज ऑफ चेकिंग द वॉल्यूम एनालिसिस एज ऑफ नाउ. नाउ एक्सपायरी है तो वी कैन चेक मैक्स पेन लेवल. सो 16,500 प्रोबेबली मार्केट इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए. ओके, सो 16,500 कुड बी द क्लोजिंग रेंज. ओके, मार्केट इसके आसपास ही क्लोज होना चाहिए इफ दैट हैज टू बी देयर, राइट? ओके, सो दैट इज निफ्टी. लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी. इट इज इंपॉर्टेंट, पीपल ट्रेड मोर बैंक निफ्टी देन निफ्टी ऑन एक्सपायरी, राइट? ओके, so again we have seen that nifty bank nifty turned bullish very early before that nifty. okay, so breakout किया था यहाँ पर and again ये वाला जो gap है probably they are trying to fill it up. okay, market नीचे आया था 35,300 के आसपास, again went up. so 35,000 and 36,000 ये 1,000 points का range हम anticipate कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, right? okay, so this is the range if market इसके बीच में close होना चाहिए, right? okay, so option sellers के लिए is a good day, looks like good day. okay, now bank nifty open interest no clear sign again, right? okay, 36,000 पे जो एडिशन हुआ था दैट हैज बीन उसमें आप देख सकते हैं काफी अनवाइंडिंग हुआ है सिंपली, राइट? ओके, एंड ऑन द लोअर साइड अगर हम देखें तो पुट में एडिशन हुआ है यहाँ पर 35,500. तो स्टिल आई एम टेकिंग दिस 1,000 पॉइंट रेंज. ओके,
अगर straddle create होगा तो 35,500 के आसपास का होना चाहिए, because there is a gap down opening. So थोड़ा बहुत अगर market इसके आसपास open होता है तो people will definitely create straddles at this point. So this is the range where we are anticipating, right? Okay, fine. Okay. So that's the range. Even if that movement comes, so we can anticipate 36 or 35 on the downside. So that is the level. Okay, good. So till this point we have okay with the analysis. Let's check the max pain level for Bank Nifty also. So 35,500. So that's not a major change, right? Okay, fine. Okay. Now let's see the contribution for yesterday. So it was negative move. So you can see IT is not performing. Okay, FMCG, private banks did come into the picture, right? Okay, so they have provided a good support here. Okay. Now let's talk about the stocks. We can simply check the ban list first. Okay, so as of now, no stock in the ban list, right? Now let's just finish the stocks. So we'll try to see if we can go and see something out of the trap indicator. Okay, fine. So there are a lot of stocks for yesterday. Even we can check some stocks from the previous day. We talked about Coal India, so it's still there. So that's okay. Hero Motocorp is still there. Okay. Now, if you want to select something, so Bajaj Auto stocks are still going up. So Bajaj Auto seems to be good. Okay. Let's go with Bajaj Auto. But we will be, looking for the stocks after 9:20. If it is there, then we can just simply go and take the trade, right? Okay. In Bajaj Auto, we have a put writing trap. So probably not convinced with, put writing specifically, but yes, there is a trade happened. Okay. So auto stocks are performing, so it's a put writing. So we'll go with the call writing. Okay, so that will be like good trades. Okay, so Ashok Leyland looks fine here. So let's go with Ashok Leyland. So Ashok Leyland looks good. We have discussed earlier also, right? Probably the stock is still trading in a range. But if we check the OI here, so OI is quite good. Okay, we have two shorts in between, but yesterday long built up is quite good enough. काफी अच्छा यहाँ पे addition हुआ है, so that's not an issue. So that's fine. It has to break that level. That's all. So it's consolidating in a very small range. So any movement further above like 140, it will take to 145 to 150 on the higher side. 135 would be a good stop support, right? Okay, so simply 135 is the level, right here only on the technical chart also. तो technical chart के हिसाब से भी 135 का आपको एक support दिख जाएगा इसमें, और 145 का easy as ही level anticipated है और breakout करेगा तो 150 155 तक stock easily move कर सकता है. तो Ashok Leyland could be, a good trade for positional trade also, right? Okay. So that is the thing. Second thing, okay, let's see this from the built up, right? Okay. So we'll do this analysis for B. Okay. Okay. So there are good stocks. There are a lot of stocks which just looks bullish, right? M&M looks fine. Okay. Fine. We can take any particular stock. Ashok Leyland we have already taken, so that's fine. Okay. So Eicher Motor looks fine here if I check, because auto stocks are performing, so we can see if that is likely to happen. So that's again a good breakout here happened. Okay, and then stock moving up. So आज कल के सेशन में थोड़ा सा unwinding जिसने दिखाया, right? Okay. Eicher Motor. So okay, that's not an issue, just a small dip. Okay. So OI looks good. So Eicher Motor में अगर थोड़ा भी dip आता है, so probably let's say अगर इसमें further dip आता है तो 2700 is the level that we can look for, right? Okay. So दो ट्रेड पोजीशन बन सकता है इसमें. 2700 के आसपास आएगा तो वी कैन लुक फॉर, अगर फर्दर अनवाइंडिंग होता है तो 2700 के आसपास इसको बाइंड किया जा सकता है. ओके. और अगर 2800 लेवल ब्रेक कर देता है ये स्टॉक, नीचे नहीं आता और ऊपर की तरफ चला जाता है, इट ब्रेक दिस लाइन, सो वी विल गो एंड बाय दिस स्टॉक. सो 2900 and 3000 वुड बी एंटिसिपेटेड लेवल ऑन द हायर साइड, बिकॉज अभी एक्सपायरी पूरा पड़ा है तो वी कैन स्टिल गो फॉर दिस. ओके. एंड then 27 will be a good support, right? So that's the thing, right? Okay. So I hope this is okay. So Eicher Motor and Ashok Leyland are the two stocks which are looking bullish because of, the data suggests that. Okay. So even in the built-up cycle, we can see Ashok Leyland is there, and in Eicher Motor is also we have find this. Even in
trap indicator Ashok Leyland is there, so we can just try that. Okay, so both the stocks looks good. Okay, so expiry day, right? Okay, so Nifty range is on the higher side. If you just simply see that 16,700 and 16,400, right? 36 and 35 for Bank Nifty. Okay, we have seen that. Okay, not a major contribution from any particular sector. Specifically, we have seen that IT is on the negative side. Okay, but autos are performing since few weeks, right? Okay, so Eicher Motor and Ashok Leyland are looks good, right? Okay, and there is no stock trading in the ban list as of now. Okay, so that's all from my side, guys. I'll see you again tomorrow. Thank you so much. Bye and take care.